My dear students, today I want to discuss shortest distance between two skew line and shortest distance between two parallel line. What do you mean by the term skew line? Two lines lying in the same plane are called coplanar lines. Coplanar lines are called intersecting line, or you can say coplanar lines are either parallel or intersecting. But what is skew lines? Two lines in space which are not coplanar are called skew line. Skew lines are neither parallel nor intersecting. Line of shortest distance between two skew lines you have to find. Now my dear student, recognize which are the स्क्यू लाइन ए बी. यहाँ पर देखो ए बी इधर है, दूसरे प्लेन में है, और सी डी भी दूसरे प्लेन में है. ये और ए बी एंड सी डी बोथ आर नॉट पैरेलल, नॉर पैरेलल बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स, सो इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग ऑल्सो. ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है. तो ए बी और सी डी कैसा लाइन हुआ? स्क्यू लाइन. क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये दो प्लेन में है. ये एक प्लेन में है जैसे, और ये दूसरे प्लेन में है. तो दो प्लेन के बीच का वैसा लाइन नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल. सी डी एंड ए बी आर नॉट पैरेलल. ये पैरेलल तो नहीं है, साफ साफ लग रहा है, लेकिन इंटरसेक्टिंग भी नहीं है. यदि एक प्लेन में रहता तो इंटरसेक्टिंग होता, बट these two lines are in different planes, so it is not intersecting. So BC is the shortest distance. BC is the shortest distance. So my dear students, now I want to find the shortest distance between two skew lines and also two parallel lines in a plane. So see here, this is a very important method and easy method. Suppose here L1 and L2 are two lines. L1 और L2 दो lines है. ठीक है भाई. L1 is passing through A and L2 is passing through B. L1 is passing through A1 and L2 is passing through A2. So now you can see that here, let the line L1 and L2 are non-coplanar lines and vector B1 is not equal to vector B2. Vector B1 is not equal to vector B2. ये जो B1, L1 is not equal to L2. So let the lines of shortest distance L is the shortest distance between L1 and L2. And L1 and L2 are two skew lines. L1 and L2 are two skew lines. So L is intersect L2 at D and L1 at C, and this is shortest distance. CD is shortest distance. So we want to find the value of this CD. Try to understand. Here L1 represent vector B1 and L2 represent vector B2. So if you take the cross product of vector B1 and B2, then it will be perpendicular on this plane. Perpendicular on this plane, and it is also parallel to CD. The cross product of B1 cross B2 is perpendicular on L1 and L2, and CD is also perpendicular on L1 and L2. So both are parallel. The B1 cross B2 is parallel to CD, parallel to vector CD, you say. So now we want to find here the magnitude of CD. The magnitude of CD. CD is the shortest distance between L1 and L2. Let unit vector be n is a unit vector along CD. CD के along CD को हमको वेक्टर बनाना है, तो क्या चाहिए? CD का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या? यूनिट वेक्टर. तो
सी डी किसके पैरेलल है? सी डी पैरेलल है B1 क्रॉस B2 के। तो B1 क्रॉस B2 का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। दैट विल गिव यू द डायरेक्शन। सो unit vector n can be written as B1 cross B2 and magnitude of B1 cross B2. It will give the direction of CD. तो CD के मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन से हम प्रोडक्ट निकालना है, तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ना अब CD दो रोल अदा कर रहा है, समझना है। CD जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये दो रोल अदा करना है। क्या दो रोल? एक तो L1 और L2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्कू लाइन का, और AB का प्रोजेक्शन भी है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन CD. सो नाउ CD इज प्रोजेक्शन ऑन लाइन L, CD इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन L. ये AB जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन है किस पर? लाइन L पर। CD लाइन L पर प्रोजेक्शन है। प्रिय विद्यार्थियों, वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर AB, वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर AB एंड डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर N. सो वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर AB एंड डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर B1 क्रॉस B2. यूनिट वेक्टर के बदले क्या लिखेंगे? B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2. सो वेक्टर CD इज इक्वल टू वेक्टर AB डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2, a magnitude of B1 cross B2. It represents unit vector. It represents unit vector. So my dear student, so magnitude of CD is equal to magnitude of AB dot B1 cross B2, magnitude of B1 cross B2, and also vector AB is equal to position vector of B minus position vector of A, that is vector A2 minus vector A1. So magnitude of CD, shortest distance vector CD, is vector A2 minus A1 dot product with vector B1 cross B2 by magnitude of B1 cross B2. This one is the unit vector. So now shortest distance between L1 and L2, that is magnitude of CD, is vector A2 minus A1 and dot product with vector B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2. So my dear students, you must keep in your mind, in case of shortest distance we take dot product. Why we take dot product? Because CD is the projection of vector AB. CD is projection of vector AB on line L. इसीलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है। बच्चे कभी कभी यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिए होते हैं। कैसे याद करोगे? याद इसको इस तरह किया जा सकता है कि CD तो शॉर्टेज डिस्टेंस है ही, और दूसरा रोल भी अदा कर रहा है, डबल रोल। डबल रोल क्या अदा कर रहा है? CD is the projection of CD is the projection of vector AB. कहाँ पे? ऑन वेक्टर L, ऑन वेक्टर L. इस बात को याद रखना है। और इस तरह जो विभिन्न किताब में विभिन्न ढंग से बातों को रखा हुआ है निकालने के लिए, डेराइवेशन के लिए, आप उसको भी देखिएगा। और ये प्रोजेक्शन मेथड मेरे ख्याल से हल्का होता है, आसान होता है, इसलिए हर सवाल का, छोटे बड़े सवाल का डेरिवेशन दिमाग में रखना चाहिए, तभी आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। हम लोग कॉपियाँ जांचने देखते हैं, जाते हैं, तो यहाँ पर प्राय बहुत बच्चा डॉट के जगह क्रॉस लिख देता है, सवाल गलती हो जाता है। इसलिए शॉर्टेज डिस्टेंस दो स्क्यू लाइन के बीच में डॉट होता है, क्योंकि यह प्रोजेक्शन है शॉर्टेज डिस्टेंस भी, किसका? वेक्टर AB का। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। In this case, L1 and L2 are coplanar and vector B1 is equal to vector B2 is equal to vector B. Let's see with the foot of perpendicular from B on line L1. Let's see here this figure. L1 and L2 are parallel. पैरेलल कब होगा? जब एक कोप्लानर होगा, जब एक प्लेन में होगा, जब एक प्लेन में होगा। So here what do you observe? This BC is the shortest distance between two parallel lines which lie in a plane. And so now you take 2 points AB. My dear student, here B1 is equal to B2 is equal to vector B. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ L2 is parallel to L1. L2 is parallel to L1. So now vector AB
is equal to position vector of B minus position vector of A, that is vector A2 minus A1, and magnitude of AB sin theta. This BC is what? AB sin theta. This BC is AB sin theta. Instead of AB, we can write magnitude of vector AB sin theta. So, this is BC. This is BC. So, shortest distance between two parallel lines is magnitude of vector AB sin theta. That is vector AB cross vector B. If you take cross product of vector AB with vector B, then it will be magnitude of AB, magnitude of vector B, sin theta, and unit vector. So vector AB cross vector B is equal to, instead of vector AB sin theta, vector AB sin theta, we write BC, we write BC, magnitude of vector B, and unit vector. Now we take magnitude of vector AB cross B is equal to BC, magnitude of B, and unit vector N. So now vector AB cross vector B is equal to BC, magnitude of vector B, and unit vector N is equal to 1. So BC is equal to magnitude of AB cross BC by vector B. BC is equal to vector A2 minus A1 cross product with vector B divided by magnitude of vector B. BC is equal to vector A2 minus A1 cross product with vector B का magnitude divided by magnitude of vector B. Hence, the shortest distance between L1 and L2. Hence, the shortest distance between L1 and L2 is equal to magnitude of A2 minus A1 cross product with B by magnitude of B. In this way, my dear students, we can find the shortest distance between two skew lines and between two parallel lines. Two parallel lines means दोनों लाइन एक ही प्लेन में आएगा, इसलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का थ्योरी हुआ. इस थ्योरी को भी आप पढ़िए और तब सवाल बनाइए. इससे हमारे ख्याल से इस साल सवाल आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है. 2018 में आया है, पिछले साल नहीं आया, तो इस साल सवाल आना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं. और हम कुछ सवाल को बनाने के तरीके को भी मैं लिख रहा हूँ और कुछ सवाल को भी बोर्ड का डायरेक्ट बनाया हूँ, और एनसीईआरटी का सवाल आप अपने से बनाइएगा. यही मेरा स्ट्रेटेजी है इस चैप्टर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए. माय डियर स्टूडेंट, हाउ विल यू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. कभी कभी क्वेश्चन में टेल क्वेश्चन दे देता है, व्हाट इज नेचर ऑफ द लाइन्स. कैसे पता करोगे? फर्स्ट यू, हाउ विल यू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? फर्स्ट यू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. Here there are two straight lines. So vector r is equal to vector a1 plus lambda b1. Vector r is equal to vector a2 plus mu b2. Where vector a1 is equal to xi plus yj plus x1i plus y1j plus z1k. Vector b1 is equal to x1 dash I plus y1 dash j plus z1 dash k. Vector is equal to a2 is equal to x2i y2j z2k. And vector b2 is equal to x2 dash I plus y2 dash j plus z2 dash k. If vector b1 is equal to b2 is equal to vector b, then the lines are parallel, and in this case the shortest distance between the given line is vector a2 minus vector a1 cross product with vector b divided by magnitude of b. Step 3, if vector b1 is equal to vector b, then the lines are either intersecting or skew lines. In this case, the shortest distance between the given line is 0. Vector a2 minus vector a1 and dot product of vector b1 cross b2, magnitude of b1 cross b2 यदि 0 हो जाए, 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. दिस इज द टेस्ट ऑफ दिस फार्मूला. इस तरह से भी सवाल बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं इंटरसेक्टिंग है, तो दोनों के बीच का हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल ली. शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं है तब इंटरसेक्टिंग नहीं है. इन द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द गिवन line is 0, if the shortest distance between the given line is 0,
then they are intersecting, otherwise they are skew lines. Otherwise they are skew lines. So my dear students, keeping in this method in your mind, now I want to discuss some important problems of different types which are based on shortest distance. Find the shortest distance between the following lines. Vector r is equal to vector I plus 2j plus 3k plus lambda 2i plus 3j plus 4k, and vector r is equal to 2i plus 4j plus 5k plus mu 4i plus 6j plus 8k. The vector equation of given lines are here vector r is equal to vector I plus 2j plus 3k and lambda times of vector 2i plus 3j plus 4k is equal to a1 plus lambda b1, where a1 is equal to I plus 2j plus 3k, b1 vector b1 is equal to 2i plus 3j plus 4k, vector r is equal to twice I plus 4j plus 5k plus twice mu 2i 3j plus 4k cap, 2i plus 4j plus 5k cap is equal to a2, mu1, and this is vector v2. So vector a2 plus mu1 vector v2, where a2 is equal to 2i plus 4j plus 5k and 2i b2 is equal to 2i plus 3j plus 4k, and a2 is equal to vector a2 is equal to 2i plus 4j plus 5k. This is very, very important. You first write the equation of a straight line and you point out which are a1, which are b1, which are a2, which are b2. ये पहला स्टेप हम उठाएंगे. नाउ अब देखेंगे आँख खोल के, क्या वेक्टर a2 इक्वल टू ट्वाइस आई 4j 5k, ये तो देख लिए. व्हाट इज द वेक्टर b1 and वेक्टर b2? See here, vector b1 is equal to 2i plus 3j plus 4k and vector b2 is equal to 4i plus 6j plus 8k. What is the relation between vector b1 and b2? These two vectors are parallel. यही देखना है. बच्चे इसको देख नहीं पाते हैं और स्कूल लाइन वाला सवाल का फार्मूला लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है. प्रिय विद्यार्थियों, here therefore the shortest distance between given lines is vector a2 minus vector a1 cross product with vector b by magnitude of vector b. Vector a2 minus vector a1 is equal to 2i plus 4j plus 5k minus I plus 2j plus 3k, and this is vector I cap plus 2j cap plus 2k cap, and vector a2 minus a1 cross vector b you write in the form of determinant I, j, k, and write the component of this vector 1, 2, 2, 2, 3, 4, and it is I 8 minus 6 minus j 4 minus 4 plus k cap 3 minus 4, that is 2i cap minus 0j cap plus k cap. So magnitude of vector b is equal to magnitude of 2i plus 3j plus 4k, that is 2 square 3 square plus 4 square square root, that is root 29. Substituting the values in first, we get the shortest distance between given lines is 2i plus 0j minus k divided by root 29, that is square root of 2 square plus 0 square plus minus 1 square is equal to root 29, and it will be root 5 by 29 units. Root 5 by 29 units. Now my dear student, I want to discuss problem number 2. Write the nature of the lines. This is a tail question. Write the nature of the line. Vector r is equal to 2i plus 3k plus lambda I plus 2j plus 3k, and vector r is equal to twice a plus 6j plus 3k plus mu 2i plus 3j plus 4k. Also find the shortest distance between them. My dear student, we write given equations are vector r is equal to twice minus 3k cap plus lambda I plus 2j plus 3k cap. Vector r is equal to vector a1 plus lambda b1, where a1 is equal to 2i minus 3k cap and b1 is equal to I plus 2j plus 3k. Again, the second equation is vector r plus 2i plus 6j plus 3k mu 2i plus 3j plus 4k, and that is a2 plus mu b2, not square, b2. This is b2 vector v2, where vector a2 is equal to twice I plus 6j plus 3k cap, vector b2 is equal to twice I plus 3j plus 4k,
Here vector b1 is not equal to vector b2. Therefore given lines are either intersecting or skew lines. Vector b1 is not equal to vector b2. Here vector b1 is not equal to vector b2. तो यहाँ दो केस परिस्थिति हुआ, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल तो है नहीं, या स्क्यू लाइन्स होगा. So the shortest distance between given lines is vector a2 minus a1 dot cross product of b1 cross b2, magnitude of b1 cross b2. So vector a2 minus a1 is equal to twice I plus 6j plus 3k, 0I plus 2j minus 3k. So vector a2 minus vector a1 is equal to twice I plus 4j plus 6k. Vector b1 cross vector b2 is equal to I, j, k, 1, 2, 3, 2, 3, 4. So I, 8 minus 9, minus j, 4 minus 6, plus magnitude, plus k cap, 3 minus k, plus k cap. So that is minus I cap plus 2j cap minus k cap. So magnitude of b1 cross b2 is equal to magnitude of I plus 2j cap minus k cap, that is root 6. The shortest distance between given lines is 2I plus 4j plus 6 cap and dot product with I minus I plus 2j minus k, that is 0 units. That is 0 unit. देख लो 2 minus 2 8 and that is minus 6. तो minus 2 minus 6 minus 8 और ये plus 8. You can write it in this way. 2 into minus 1. 4 plus 2. 4 into 2. Minus 6 into minus 1. That is minus 6 minus 2 minus 8 plus 8 magnitude of 6 and square root of 6. It is 0 unit. Hence the given lines are intersecting lines. So now my dear students, we want to solve the next problem. Write the nature of the lines. Vector r is equal to 4i plus j plus 0k plus mu plus lambda I plus 2j minus 3k. Vector r is equal to I minus j plus 2k plus mu 2I plus 4j minus 5k. Also find the shortest distance between them. Given equation, vector r is equal to 4I minus j plus 0k plus lambda I plus 2j minus 3k. That is a1 plus lambda b1, where a1 is equal to 4I minus j plus 0k. b1 is equal to I cap minus j cap plus 2k cap. Vector r is equal to I cap minus j cap plus 2k cap plus mu 2I cap plus 4j cap minus 5k cap. So vector r is equal to vector a2 plus lambda mu vector b2. a2 is equal to I minus j plus 2k cap. b2 is equal to 2I cap plus 4j cap minus 5k cap. Here b1 is not equal to b2. ये अवश्य चेक करो. Vector b1 is not equal to vector b2. Therefore given lines are either intersecting or skew lines. So the shortest distance between the given lines is vector a2 minus vector a1 dot product with vector b1 cross b2. And after solving, the value of vector a2 minus a1 is equal to minus thrice a minus j plus 0k cap. Vector b1 cross vector b2 can be written in the determinant form in this way: I cap, j cap, k cap, 1, 2, minus 3, 2, 4, minus 5. So I cap minus 10 plus 12, minus j minus 5 plus 6, k cap 4 minus 4. So vector b1 cross vector b2 is equal to 2I minus j cap. So magnitude of vector b1 cross b2 is equal to root 5. Substituting the value in first, we get the shortest distance between given lines is minus 3I cap plus 0j cap plus 2k cap dot product with 2ik I cap minus j cap plus 0k cap by root 5, that is 6 by root 5 units. My dear student, in this way we have solved different types of problem based on shortest distance. Shortest distance के सवाल बनाने में हमको दो सावधानियां रखनी है. b1 और b2 को देखना है. If b1 is equal to b2, then both the lines are parallel. So my dear student, I hope you have followed me, you have understood me, and
after doing all the problems are the problems which were asked in this CBSE board examination. So my dear students, I hope you do this problem frequently and solve. There are 3 or 4 problems in NCERT. This is for your homework. Thank you. Thank you very much.